Hi there. So now jkssb preparation has become my whole personality. Like seriously, सुबह उठ के टेंशन, रात को सोने से पहले टेंशन, बीच में टाइपिंग टेस्ट. आई मीन जेन्युइनली आई थिंक हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का लाइफ में बस 3 चीज़ों पे चल रहा है. दैट इज़ रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी एंड टाइपिंग स्पीड कितनी हुई. Jokes apart, I actually know there are people watching this video who are actually tired, like mentally exhausted. And you sit to study and then suddenly comparison thing starts. Like किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं, किसी की टाइपिंग में 70 वर्ड्स पर मिनट है, किसी का सिलेबस कंप्लीट है. आई नो बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम. एंड देन देयर्स अस, ठीक है, मेरे जैसे बंदे जो इतना सब भी चल रहा है बट स्टिल दे आर सेइंग चलो भाई कुछ नहीं होता, लेट्स ट्राई इट अगेन. ओके, आई थिंक यही इंसान को अपनी लाइफ में करना चाहिए बिकॉज यू कांट कंट्रोल एनीथिंग एल्स, राइट. जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है आप उसके लिए क्या कर लोगे. सो this channel, like I have made for myself, and I'm seeing people out there who are also trying even after feeling stuck. Okay, so if you are also preparing for this junior assistant exam typing 2, then trust me, you are not alone anymore. And आज का typing is all about ki if you're tired, if you do not want to do anything else, it's simple test. It's a 5-minute test. When you really don't want to do much, just give a 5-minute test because it's like you are doing something. It's building your consistency. Because today I was not feeling like typing, so I did this 5-minute test and कंसिस्टेंसी के लिए ही मैंने किया. सो मेरी प्रैक्टिस भी हो गई एज वेल एज इट वॉज फ्रूटफुल फॉर मी दैट आई स्टिल शोड अप फॉर माई सेल्फ. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इट्स नॉट ऑल अबाउट टाइपिंग. इट्स लाइक विच एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, it's less about motivation, more about the sitting again the next day, even when mood kharab ho, even when confidence zero ho, even when family ask ab kaun sa paper aur kitne paper dene hain. Like really you have to do it for yourself. And by the way, coming back to the typing thing, if you're stuck between 30-40 words per minute, because I am stuck in this phase, welcome to the most irritating phase ever. बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू रश टूवर्ड्स द स्पीड, देन माई एक्यूरेसी ड्रॉप्स. एंड जब स्पीड बढ़ाओ तो आपको पता ही है क्या होता है. लाइक स्पीड बढ़ाओ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और अगर स्पीड कम करो तो एक एक्यूरेसी के चक्कर में देन वर्ड्स पर मिनट कम आते हैं. So it's all about your daily practice. I'm not saying कि आज, even I'm not expecting कि आज ही मेरी स्पीड पहुंच जाए 70 words per minute. But I'm trying because I know that I have started from 15 words per minute. Trust me guys, I'm telling you. I have learned this touch typing thing and started from this 15 words per minute. And now it is me only who is like at this stage 30 to 40. So maybe if I practice it will become better. Not maybe, it will surely become better. Whenever you try something every day, it will become better. It's all about your memory, muscle memory thing. So it is becoming better day by day.
So I just want to say to you that if you studied today, and if you practice today, and if even you showed up for today, then that's a win-win.